Position line is any line that passes through the observer's position. So once we know a PL on chart, that means the observer lies somewhere on that position line. In chart work, we often refer to straight line PLs. However, sometimes non-straight line PL is also used. A unique straight line can be drawn on chart or any plane surface only if one of the following conditions is satisfied. A point in which to draw the position line and the direction of the position line is known, or we know the 2 points through which to draw the position line. Okay, better now I would just pause it here. I want you to see each and every point and let me know if there is doubt in any of the points. So just read them one by one. किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी डाउट आता है तो आपने पूछना है. Clear. Very good, beta. So let's proceed ahead then. Let us now list down all the methods which can possibly be used in chart work to give us the PL. Bearings. These bearings could be visual or obtained by use of any electronic navigational aid like radar. PL by transit bearing. PL by opposite bearings. Sector boundaries of sector lights acting as PL. Depth contours being used as PL. And lastly, the celestial position lines. Now beta, these are the different methods with which position lines can be obtained and plotted on the chart. हम इन सारे methods को one by one अब आगे देखने वाले हैं. Bearings, transit bearing, opposite bearing, sector boundaries, depth contour, celestial PL, इन सबको हम one by one chart पे अभी देखने वाले हैं. So we will see it now. Now let us understand all of these one by one. PL by bearing. On the chart, please remember only two courses and true bearings are to be plotted. The bearings given to us in the questions or obtained on ships may be gyro or compass. We must be proficient in converting gyro bearings to and true bearings to gyro. Likewise, compass to true and true compass, depending on which compass, whether the standard compass or the gyro compass has been used for taking the bearings. If in doubt, please watch the video on compass error and its applications. Okay, so beta, we have seen the conversion of compass to true and true to compass. Last lecture में हमने CDMVT, Cadbury's Dairy Milk Very Tasty, compass, deviation, magnetic, variation and true. इसका relationship हमने last lecture में किया था. So we can convert true to gyro, true to compass or compass to true, whether it is gyro or magnetic compass. So any other doubt beta in any of the points on this slide? Not yet, sir. Okay beta, great. Let's continue. We will see now how these bearings are plotted on the chart and what type of questions can come. These are very basic questions. Usually these are done as the first chart work topic in pre-C, but we are picking them or touching them again so that there is no doubt in your mind. Let's continue. And its applications.
Now, PL by bearing. Let's understand this through these small examples. Plot the following PLs on chart. Old head of Kinsale, light bearing 270 degrees compass, variation 5 degrees west, deviation 3 degrees east. And the second one, Roche's point, light bearing 330 degrees gyro, gyro error 2 degrees low. First thing is, we need to identify these landmarks, old head of Kinsale light and Roche's point light on the chart. Okay, beta, all these examples which are discussed in the video, in fact all the coming videos or in my slides also, they are taken up from chart number 5048. 5048 is one of the charts which is used for our exams by the MMD. So ये सारी की सारी एग्जाम्पल चार्ट नंबर 5048 पे हैं. आप इनको एक्चुअली भी चार्ट 5048 पे प्लॉट करके अपने आंसर्स भी मैच कर सकते हो. So let's now see this question. You can see that this one is old head of Kinsale and this one is the Roche's point. Now we need to convert the compass and the gyro bearings into two. Now the first case, we have the variation is 5 degrees west, deviation 3 degrees east. Compass error shall be the algebraic sum of variation and deviation, which in this case would be 2 degrees west. The compass bearing of old head of Kinsale is given to be 270 degrees compass, to which we apply the compass error and obtain the true bearing. We can remember the old rhyme, error west, compass best, error east, compass least, meaning if error is west, then compass is more than true, and if error is east, compass least, compass is lesser than true. So in this case, error west, compass best, and thus the true bearing of old head of Kinsale light is 268 degrees true. The second one is the Roche's point light bearing 330 degrees gyro. Gyro error given in the question is 2 degrees low. Low gyro error means that the gyro values are lesser than the true. So accordingly we apply, and true bearing of the Roche's point is then 332 degrees true. Beta, is this clear up to here? Any doubts? Clear. Okay, very good. Now we plot these bearings, we use compass roses, and we plot the bearing on the side on which the vessel may be. We don't have to draw it on both sides. Now you can see on this chart, this old head of Kinsale, light bearing 268 degrees true. So the PL is drawn in the reverse direction. So if you're anywhere on this PL, which could be extended to whatever length you need, the bearing of old head of Kinsale shall be 268 degrees true. Likewise, for Roche's point, where the bearing is 332 degrees true, you draw it in the reciprocal direction. So now wherever you may be on this line, the bearing of Roche's point light would be 332 degrees true, and this line could be extended to whatever length we need for our purpose. So is it clear, beta? Up to here, we have the PL plotted on the chart now. Yes, sir. Very good, beta. So this is the most basic plot. We had a position line and we plotted it on the chart. Basic thing. Let's proceed ahead now. Yes, sir. वेस्ट का मतलब लो होता है क्या? Ask again, beta. सिर्फ 2 डिग्री वेस्ट, जो 2 डिग्री लो लिखा होगा है, ये लो कहाँ से आया? वेस्ट का मतलब लो होता है क्या हमेशा? ओके, नहीं बेटा, ये अलग अलग सवाल हैं. नंबर 1 क्वेश्चन अलग है और नंबर 2 क्वेश्चन अलग है. नंबर 1 में मैग्नेटिक कंपास को यूज किया है
तो कंपास एरर 2 डिग्री वेस्ट उन्होंने हमें क्वेश्चन में ही दी है। नंबर 2 क्वेश्चन में जायरो कंपास को यूज किया है और जायरो एरर हमें 2 डिग्री लो दी गई है। जायरो एरर इज नॉर्मली गिवन एज लो और हाई। मैग्नेटिक कंपास एरर इज गिवन एज यूजुअली ईस्ट और वेस्ट। ओके बेटा, अंडरस्टूड? यस सर। वेरी गुड। और कोई डाउट बेटा? सर ये 270 ये 2 डिग्री जो कंपास एरर आया वेस्ट, तो कंपास वेस्ट, तो फिर उसके बाद में वो माइनस उसमें से 270 में से 2 डिग्री माइनस कर दिया, ट्रू आ जाएगा उसका, क्योंकि वो वेस्ट है। राइट बस बेटा, error। एरर वेस्ट कंपास बेस्ट, मतलब कंपास बड़ा होना चाहिए, मतलब ट्रू बियरिंग छोटी होनी चाहिए, तो हमने 2 डिग्री को माइनस कर दिया। ओके सर। ओके, और कोई डाउट बेटा? उसके बाद हमने फिर कंपास रोज से वो दोनों बेरिंग ट्रू बेरिंग को प्लॉट कर दिया, बस इतना ही किया है ना सर अभी तक? राइट बेटा, वेरी गुड। यू सी द कंपास रोज हियर ऑन द चार्ट। हमने पैरेलल रूलर को अलाइन किया कंपास रोज पे इन द डायरेक्शन ऑफ द बियरिंग, और फिर हम पैरेलल रूलर को इस लाइट हाउस पे ले गए और हमने ये पीएल को प्लॉट कर दिया। ओके सर। ओके, लेट्स प्रोसीड अहेड। PL by transit bearing. Two lights or two conspicuous objects are said to be in transit when both are in straight line as viewed from the ship or from the observer. That is, the bearing of both the objects is the same to the observer. When in transit, the ship has to be on a straight line passing through those two conspicuous points or the objects. As there is one and only one straight line that can be drawn through 2 points on a plane surface, the line joining the two objects extended in the direction of the ship provides a PL to the observer. Transit bearings also provide a convenient opportunity to obtain the compass error. So beta, just go through these points one by one and let me know if you have any doubt in any of the points. तो थर्ड और फोर्थ लाइन बता दो। ओके, जो थर्ड पॉइंट है बेटा, इट सेज देयर इज one and only one straight line that can be drawn through 2 points. अगर हमारे पास 2 पॉइंट हैं तो उनमें से सिर्फ एक लाइन ही ड्रॉ की जा सकती है। उस लाइन को छोड़ के कोई भी दूसरी लाइन आप उन 2 पॉइंट में से ड्रॉ नहीं कर सकते। राइट बेटा? यस सर। सो अगर 2 ऑब्जेक्ट ट्रांजिट में हैं, उन दोनों में से हम अगर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे तो वही लाइन जो है हमारे शिप की पोजीशन लाइन होगी। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड पॉइंट। हम अभी इसे चार्ट पे प्लॉट भी करेंगे। ओके, जो नंबर 4 पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि अगर आप ट्रांजिट बियरिंग लेते हो तो ट्रांजिट बियरिंग से आप इजीली अपनी कंपास एरर भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, आप जैसे ही ट्रांजिट बियरिंग को चार्ट पे प्लॉट करते हो, आपको उसकी ट्रू बियरिंग मिल जाती है। वो जो ऑब्जेक्ट है उसकी ट्रू बियरिंग आपको मिल जाती है। कंपास बियरिंग आपने ऑब्जर्व की होती है और दोनों के डिफरेंस से हमें कंपास एरर भी मिल जाती है। ये हम अभी चार्ट पे करके देखेंगे। ओके बेटा? ओके सर। Okay, let's proceed. Let us understand the transit bearing and its use for getting the compass error through a simple example. At 2000 hours, vessel observes Ballina Coty light and Minehead light to be in transit. When in transit, bearing was observed to be 015 degrees gyro
and 018 degrees compass. Draw 2000 hours PL. Obtain the error of the gyro compass. Obtain error of the standard compass or the compass error. If variation is 3 degrees west, find deviation for the ship's head. Okay, बेटा now you just read the question carefully और क्वेश्चन में आपको कहीं भी अगर कुछ डाउट है तो आप पूछो मुझसे। सर ये ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? मीट पॉइंट? ओके बेटा, ट्रांजिट का मतलब होता है, लेट अस से आप शिप पे हो, आप लैंड के पास हो, आपको एक लाइट हाउस दिखाई दे रहा है। सो यस सर। आप जब उस लाइट हाउस को देख रहे हो तो सेम डायरेक्शन में आपको एक वाटर टैंक भी दिखाई दे रहा है। तो लाइट हाउस और वाटर टैंक दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। मतलब अगर आप एजीमुथ मिरर से उसकी बियरिंग लोगे तो लाइट हाउस और वाटर टैंक दोनों सेम बियरिंग पे ही आएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिट बियरिंग। दोनों का साइज ओके सेम, सर। पीछे वाला दिखाई भी नहीं देगा, मतलब इस तरीके से बोल रहे हो ना? हाँ बेटा, पीछे वाला दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर एक बड़े साइज का है दूसरा छोटे साइज का है, पीछे वाला बड़ी चीज है तो फिर तो दिख जाएगा ना। जी सर। ओके, सो अब इसको सॉल्व करें बेटा, सवाल को। यस सर। ओके, ऑल राइट। First, let us identify the Bellina-Coty light and the Minehead light on the chart. On the chart, this one is Minehead light and this one is Bellina-Coty light. Now we draw the PL by transit bearing. That means we join these two landmarks and extend them on the side on which the ship is likely to be, and that becomes the PL. Now you can see on this, these two have been joined and extended on this side where the ship is likely to be, and this becomes 2000 hour PL by transit bearing. सो बेटा ये आपको समझ में आया, हमने ट्रांजिट बियरिंग चार्ट पे प्लॉट कर दिए। यस सर। सर अगर बोलो बेटा। ये लाइन दूसरी तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है, अगर उस तरफ लैंड नहीं होती, अगर डीप वाटर होता तो फिर पता कैसा लगता है विच डायरेक्शन टू एक्सटेंड इट? हाँ, अगर बेटा दूसरी तरफ लैंड ना हो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये लाइन दूसरी तरफ भी एक्सटेंड हो सकती है। ऐसे केस में क्वेश्चन में हमें कोई ना कोई इंडिकेशन जरूर दी होगी कि शिप किस तरफ है, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट हमें जरूर दिया जाएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड। ट्रांजिट बियरिंग चार्ट पे आ गई है। Now we use our parallel ruler, put it on this line and read off the bearing of Minehead and Bellina-Coty, which of course would be same from the compass rule. In this case, we find that the true bearing of Minehead or Bellina-Coty, which is same, is 013 degrees true as read from the chart. सो बेटा ट्रू बियरिंग निकाल लोगे पीएल से? यस यस सर। वेरी गुड। The gyro bearing is given to be 015 degrees gyro. Obviously, the gyro error would be 2 degrees as the difference is 2 degrees. To determine whether it's high or low, we can see the gyro error. बेटा बताओ जायरो एरर कितनी है? 2 डिग्री हाई। वेरी गुड बेटा, 2 degrees high is the gyro error. Reading is high, so therefore the error will be 2 degrees high. Now true bearing 013 degrees true. Compass bearing given in the question is 018 degrees.
बेटा बताओ कंपास एरर कितनी है? 5 डिग्री ईस्ट। ओके, एक ऑप्शन आ रहा है 5 डिग्री ईस्ट, और कोई ऑप्शन बेटा? 5 डिग्री वेस्ट सर। दूसरा ऑप्शन आ गया बेटा 5 डिग्री वेस्ट। 5 डिग्री तो वेस्ट। 5 डिग्री वेस्ट है। वेरी गुड बेटा, इट इज 5 डिग्री वेस्ट। देखो बेटा, कंपास बियरिंग इज ग्रेटर देन ट्रू बियरिंग। जब भी कंपास बेस्ट होती है तो एरर वेस्ट होती है, सो इट विल बी 5 डिग्रीज वेस्ट। Compass. The compass error shall be the difference of the two, that is 5 degrees, and it shall be west. Why? Because compass best, error west. Compass error is 5 degrees west. Variation is 3 degrees east. बेटा हमें बताया गया है कि वेरिएशन 3 डिग्री ईस्ट है, तो अब आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट विल बी द डेविएशन? 2 डिग्री ईस्ट। सर 2 डिग्री वेस्ट। ओके, कौन बनेगा नेविगेटर? ऑप्शन 1 2 डिग्री ईस्ट, ऑप्शन 2 2 डिग्री वेस्ट, सर 8 डिग्री वेस्ट। ऑप्शन 3 भी आ गया बेटा 8 डिग्री वेस्ट। 8 डिग्री वेस्ट सर। 2 डिग्री वेस्ट है सर। 8 डिग्री वेस्ट। 8 डिग्री वेस्ट को ज्यादा वोट मिल रहे हैं। ओके, वेरी गुड। 2 डिग्री वेस्ट है। 2 डिग्री वेस्ट आएगा। Okay, let us see. Given in the question. Therefore, deviation from the ship's head becomes 8 degrees west. अब बेटा ध्यान से देखो, डेविएशन 8 डिग्री वेस्ट अगर होगी, वेरिएशन 3 डिग्री ईस्ट होगी, दोनों को जब कंबाइन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 11 डिग्री वेस्ट। 5 डिग्री वेस्ट। वेरी गुड। सी 8 डिग्री वेस्ट है, 3 डिग्री ईस्ट है, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 5 डिग्री वेस्ट। सो हमारी डेविएशन 8 डिग्री वेस्ट आएगी। आप बेटा जिनके आंसर डिफर कर रहे थे वो इसे ध्यान से देखो, आपके आंसर करेक्ट हो गए, समझ में आ गया? यस सर। किसी को अगर अभी भी डाउट है यू कैन आस्क मी। ओके, चलें बेटा आगे चलें। वेरिएशन प्लस डेविएशन Yes, इक्वल sir. टू कंपास एरर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो वो कुछ और ही आ रहा है। तो बताओ बेटा क्या आ रहा है? तो डेविएशन कंपास एरर माइनस वेरिएशन हो गया ना सर? नहीं बेटा, ये प्लस माइनस ऐसे नहीं होता। डेविएशन प्लस वेरिएशन कंपास एरर नहीं होता। आपको डेविएशन और वेरिएशन को कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब है अगर दोनों सेम नेम के हैं तो ऐड होंगे, और अगर दोनों ऑपोजिट नेम के हैं तो छोटे वाला बड़े वाले में से माइनस होगा। समझे बेटा? ओके सर। अब देखो, अब सही आ रहा है? यस सर। ओके, क्लियर बेटा, आगे चलें। यस सर। ओके, वेरी गुड। Because it is the algebraic sum of variation and deviation, which is the compass error. Next is PL by opposite or reciprocal bearings. Two lights or conspicuous objects are said to be on opposite bearing or reciprocal bearing when their bearings differ exactly by 180 degrees. When on opposite bearings, the ship must be on the straight line segment joining the 2 points or the objects. There is one and only one straight line segment that can be drawn through 2 points on a plane surface. The segment joining the 2 objects or the points provides the position line. Unlike other PLs,
This PL has a definite length. The segment is only between, or the PL length is only between the two conspicuous points. This PL cannot be indefinitely extended like the other ones. Opposite bearings also provide a convenient opportunity to obtain the compass error. Okay, so beta, just go through these points one by one and let me know your doubts. So third, fourth, fifth. ओके, थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है बेटा कि अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट हो चार्ट पे तो उन दो पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन पास कर सकती है, करेक्ट? यस सर। और अगर हमारे दो ऑब्जेक्ट हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट बियरिंग पे, तो उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, एक ही लाइन होगी, वही लाइन हमारी पीएल बनेगी। अभी हम इसको चार्ट पे प्लॉट करके भी देखेंगे। दिस इज पॉइंट नंबर 3। अब पॉइंट नंबर 4 जो है, इसका क्या मतलब है? अभी तक हमने जो पोजीशन लाइन देखी है, इस पोजीशन लाइन को जितना भी चाहे उतना एक्सटेंड किया जा सकता है, उतना लंबा किया जा सकता है जितनी हमारी रिक्वायरमेंट हो। लेकिन जो ये ऑपोजिट बियरिंग वाली पीएल है, इसको लंबा नहीं किया जा सकता। ये जो ऑपोजिट बियरिंग वाली पीएल है, ये एक सर्टेन लेंथ की होगी, आप इससे बड़ा नहीं कर सकते। अभी हम जब इसे चार्ट पे देखेंगे तो पता चलेगा कि इसे बड़ा नहीं किया जा सकता। दिस इज पॉइंट नंबर 4। और जो पॉइंट नंबर 5 है वो हमें ये बता रहा है कि अगर आपको ऑपोजिट बियरिंग मिली है तो आप इससे भी अपनी कंपास एरर का पता लगा सकते हो। सो हम अभी इसको चार्ट पे प्लॉट करेंगे। ओके बेटा, शैल वी प्लॉट? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। Let us understand this PL and its use for getting the compass error through a small example. At 2000 hours, vessel observes hook head light and conning baked light vessel to be on opposite bearings. At the same instant, hook head light bore 293 degrees gyro and 296 degrees compass. Draw 2000 hours PL, obtain the error of the gyro compass, obtain the error of the standard compass. If the variation is 3 degrees west, find the deviation for the ship's head at that time. सो बेटा जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है आप पूछो। No, sir. Okay, very good. Let us see now how do we solve this. Like earlier cases, उसमें let's ट्रू बेयरिंग नहीं दी थी सर। Ask again बेटा। सर वो क्वेश्चन में ट्रू बेयरिंग नहीं दी हुई थी सर। नहीं बेटा, ट्रू बियरिंग नहीं दी है इन्होंने क्वेश्चन में। ओके सर, ओके ठीक है सर। ओके, ट्रू बियरिंग हम निकालेंगे। हमें सिर्फ ये बताया गया है कि हुक हेड और कॉनिन बैग लाइट वेसल ऑपोजिट बियरिंग पे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। सो अब हम ट्रू बियरिंग को चार्ट से निकाल लेंगे। vision for the ship's head at that time. Like earlier cases, let's first identify the two landmarks, hook head light and the conning baked light vessel. So on the chart you can see this one is hook head light and this one is conning baked light vessel. We can now draw the 2000 RPL by joining these 2 points. You can see this blue segment here joining these 2 points is the 2000 RPL. If the vessel is anywhere on this PL,
the bearing of hook head and conning peg would be separated by exactly 180 degrees. ओके, सो बेटा ये जो ब्लू कलर की लाइन हमने ड्रॉ की है, अगर हमारा शिप इस लाइन पे कहीं भी है तो हमें हुक हेड और कॉनिन बैग ये दोनों के दोनों लाइट हाउसेज ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन या ऑपोजिट बियरिंग का क्या मतलब है कि जो भी एक लाइट हाउस की बियरिंग होगी दूसरे लाइट हाउस की बियरिंग उससे 180 डिग्रीज डिफरेंस पे होगी। इसको कहते हैं ऑपोजिट बियरिंग। सो हमारा शिप इसी ब्लू कलर की लाइन पे कहीं भी हो सकता है। सो दिस ब्लू कलर लाइन इज अवर PL। क्लियर बेटा? यस सर। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देखो इसमें कि हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, हम इसे लाइट हाउस के आगे नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप आगे चले गए और हमारा शिप यहाँ पे आ गया तो फिर तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहेंगे ना, फिर तो दोनों लाइट हाउस एक ही डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो इसलिए इस PL को एक्सटेंड नहीं किया जा सकता। ये जो PL है ये दोनों लाइट हाउसेस के बीच में ही बनेगी। क्लियर हो गया बेटा? वेरी गुड। अब तीसरी चीज बेटा, अगर हम इस PL की डायरेक्शन को कंपास रोज से चेक कर लेते हैं, पैरेलल रूलर लेके कंपास रोज से हम इसकी डायरेक्शन को चेक कर लेते हैं तो हमें दोनों लाइट हाउसेस की बियरिंग, ट्रू बियरिंग का पता चल जाएगा। राइट बेटा? क्लियर? यस। वेरी गुड। ट्रू बियरिंग अगर मिलेगी तो हम इजीली कंपास एरर, जायरो एरर दोनों निकाल सकते हैं। सो लेट अस सी नाउ। Now, read off the true bearing of hook head light. You transfer this line to the compass rose and read off the true bearing in the direction of hook head from the chart. True bearing of the hook head light from the chart is 296 degrees true. Gyro bearing of hook head given in the question is 293 degrees gyro. These two values give us the gyro error as 3 degrees low. सो बेटा जायरो एरर क्लियर है? यस। वेरी गुड। True bearing of hook head light is 296 degrees true. Compass bearing of the hook head light given to us in the question is also 296 degrees compass. Therefore, the compass error becomes nil or 0 degrees. If variation is 3 degrees west, then the deviation must be 3 degrees east, making the compass error 0 degrees. बेटा कंपास एरर और डेविएशन भी क्लियर है? नहीं सर, एक बार आप बता दीजिए वाला ये जो लिखा हुआ है ट्रू बेयरिंग 296 डिग्री एंड जायरो बेयरिंग 293, ये तो गिवन था हमारे पास। ट्रू बेयरिंग तो गिवन नहीं था ना सर हमारे पास? हाँ बेटा, ट्रू बियरिंग को हमने चेक किया है। हमने अपने पैरेलल रूलर को ये जो ब्लू कलर की लाइन हमने ड्रॉ की इसके साथ अलाइन किया और कंपास रोज से हमने ट्रू बियरिंग को रीड किया है चार्ट से। यस सर। ओके, वो हमें मिली 296। जायरो बियरिंग हमें क्वेश्चन में दी गई थी 293। इन दोनों से हमें पता चल गया जायरो एरर इज 3 डिग्री लो। यस सर। ओके बेटा? यस सर। ओके, कंपास एरर क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, एंड इज द डेविएशन आल्सो क्लियर? जी सर, वो कंपास एरर 0 है तो वेरिएशन डेविएशन 0 होंगे, वो इक्वल होंगे। वेरी गुड, दे विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट। अगर वेरिएशन 3 डिग्री वेस्ट है तो डेविएशन 3 डिग्री ईस्ट होगा, क्योंकि दोनों को कंबाइन करने पे आंसर 0 आना चाहिए। सो 3 डिग्री वेस्ट, 3 डिग्री ईस्ट दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर 0 आएगा। कंबाइन का मतलब ऐड नहीं करना ना कभी, मतलब कंबाइन मींस कंबाइन का मतलब है
अगर अभी तक दोनों ये पढ़ा है सेम, वेरिएशन प्लस डेविएशन इज इक्वल टू कंपास एरर, लेकिन आप बेटा मना कर। ये गलत पड़ा है बेटा। वेरिएशन प्लस डेविएशन इज नॉट इक्वल टू कंपास एरर। वेरिएशन एंड डेविएशन algebraic sum is equal to compass error। algebraic sum का क्या मतलब है? अगर वेरिएशन डेविएशन सेम नेम की हैं, दोनों की दोनों ईस्ट या दोनों के दोनों वेस्ट, तो वो ऐड होती हैं। और अगर वेरिएशन डेविएशन ऑपोजिट नेम की हैं, तो बड़े वाले में से छोटे को सब्ट्रैक्ट किया जाता है और बड़े वाले का नाम रखा जाता है। इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक सम। राइट बेटा? ये बेटा क्लियर हो गई बात? इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके, ये बिल्कुल ऐसे है बेटा, मैं आपको एक इजी तरीके से समझाता हूं। जो वेरिएशन है वो 3 डिग्री वेस्ट है। इसका मतलब है कि जो ये वेरिएशन है ये हमारी कंपास नीडल को 3 डिग्री वेस्ट की तरफ खींच रही है। अब जो डेविएशन है वो 3 डिग्री ईस्ट है। डेविएशन हमारी कंपास को 3 डिग्री ईस्ट की तरफ खींच रही है, तो रिजल्टेंट क्या होगा? कंपास नीडल हिलेगी? नो सर। नहीं हिलेगी ना। सो इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, एल्जेब्रिक सम है, वो हो जाएगा 0। सो अगर आप इनको ऐड कर दो तो फिर तो ये 6 डिग्री बन गया, राइट? जो कि गलत हो जाएगा। वेरिएशन प्लस डेविएशन नॉट इक्वल टू कंपास एरर। वेरिएशन डेविएशन एल्जेब्रिक सम इज इक्वल टू कंपास एरर। एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या है? सेम नेम ऐड, ऑपोजिट नेम सब्ट्रैक्ट। क्लियर बेटा? अंडरस्टूड? अब कोई डाउट तो नहीं है बेटा माइंड में? सर जैसे वेरिएशन जो था और डेविएशन ये हमें गिवन नहीं था ना? बेटा वेरिएशन वाज गिवन, डेविएशन हमें ढूंढना था। यस सर। ओके, चलें बेटा, आगे चलें। यस सर। ओके, अच्छा बेटा एक चीज का आपने ध्यान रखना है, कभी भी अगर आपको Next is PL by sector boundaries of sector lights. Sector lights are the lights that are visible in different colors over different arcs of visibility. In some cases, the sectors may be for arc of visibility and arc of obscurement, the arc in which the light may not be visible at all. The boundaries of the sectors of the arcs of different colors or arcs of visibility and obscurement are printed on the chart. When vessel observes the change taking place from one sector to another, means the vessel is on the sector boundary. The sector boundary is then the position line of the observer. ओके बेटा ये समझ में आया? इफ यू हैव डाउट इन एनी ऑफ द पॉइंट्स सेक्टर लाइट्स ये हो गई ना जो मतलब रात में लाइट्स वगैरह जो रहती है। बेटा लाइट जैसे तो ship की- दिन में भी रात में भी सब जगह ही रहती हैं, बट सेक्टर लाइट का ये मतलब होता है कि अलग अलग सेक्टर में वो अलग अलग कलर की दिखाई देती है। ओके, लेट अस से 2 शिप्स हैं, वो उसी लाइट हाउस को देख रहे हैं, दोनों की पोजीशन अलग अलग है। एक शिप को हो सकता है वो रेड कलर की दिखाई दे, दूसरे शिप को वो हो सकता है वाइट कलर की दिखाई दे, तीसरा शिप अगर है हो सकता है उसे ग्रीन कलर की दिखाई दे। ऐसी लाइट को सेक्टर लाइट बोलते हैं। अभी मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूं। ओके, लेट्स सी इट ऑन द चार्ट। सर ये ऑब्सक्योरमेंट क्या होता है? ओके, ऑब्सक्योरमेंट का मतलब होता है बेटा कि कोई लाइट हमें दिखनी बंद हो गई है, उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। ओके। ओके, कोई चीज अगर आपको ना दिख रही हो तो उसे बोलते हैं ऑब्सक्योर्ड। ओके, जैसे घूंघट डाला हुआ है, अब घूंघट डाला होगा तो फेस नहीं दिखेगा ना, सो उसको बोलते हैं ऑब्सक्योर। अभी आपको ऑब्सक्योर की एग्जांपल भी दिखाते हैं चार्ट पे।
सर एक बार फोर्थ पॉइंट भी बता दिएगा प्लीज। ओके बेटा ये अभी चार्ट पे जब प्लॉट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट हमें बता रहा है कि जब आप एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाते हो तो लाइट का कलर चेंज होता है। उस टाइम पे वो जो सेक्टर की बाउंड्री है वो हमारी पीएल होती है। अभी जब आप इसे चार्ट पे देखोगे तो आप समझ जाओगे। लेट्स सी इट ऑन द चार्ट। Let us understand the sector boundaries as PL through this example of Bellinacoti light, which is a sector light visible in different colors over different sectors. In the chart, here is Bellinacoti light, and you can see that there are certain sector boundaries which are already printed on the chart, and this light is visible in different sectors in different colors. It's visible in white out here, red in this sector, white in this sector, and green in this sector. Now, if there is a vessel which is on a northeasterly course, observes Bellinacoti light to change as follows. 2000 hours, it changes from white to red. 2020, it changes from red to white. And at 2050, it changes from white to green. Please remember, these change in colors have to be seen together with the course that the vessel is steering. In this case, the vessel is steering northeasterly course. We need to identify of all these, which are the PLs at 2000 hours, 2020, and 2050. As you can see, when on northeasterly course, when the vessel crosses this PL, this sector boundary, the color would change from white to red. On this sector boundary, it would change from red to white. And on this sector boundary, it will change from white to green. So this would be 2000 RPL, this would be 2020 PL, and this would be 2050 PL. ओके अब इसको ध्यान से देखो बेटा, आपको ये समझ में आ रहा है? सर एग्जैक्टली हमें कैसे पता होगा कि 2000 पे यही हमारी पीएल होगी? मतलब वहां पे तो पूरा सेक्टर दे रखा है ना, तो उस सेक्टर के बीच में कहीं पे भी हो सकता है 2000। नहीं बेटा, आई डिडंट अंडरस्टैंड यू, आस्क अगेन। सर जैसे कि इसमें आपने यहाँ पे लाइंस वगैरह दे रखी हैं, 4 लाइंस दे रखी थी ना पहले डायग्राम में। राइट कि बेटा, ये इतने सेक्टर पे लोगों को मतलब जो शिप होगा उसको व्हाइट लाइट दिखेगी, इतने सेक्टर पे रेड लाइट दिखेगी, ऐसे ऐसे करके सेक्टर बनाए हुए थे ना पहले, उस पे चार्ट पे पहले से मेंशन थे। हाँ बेटा मेंशन्ड है। हाँ तो सर अब 2000 पे हमें कैसे पता होगा कि उस पूरा जितना भी हमारा सेक्टर यानी कि जितना भी हमारा आर्क है तो 2000 वहीं भी लाइन बनानी है हमें? मतलब आप समझ रहे हैं मेरा क्वेश्चन? ओके बेटा देखो बेटा, क्वेश्चन में वो हमें ये बोल रहा है कि 2000 आवर्स पे ये जो लाइट है वाइट से रेड में चेंज हो गई है, करेक्ट? यस सर। और ये हमें और क्वेश्चन में बता रहा है कि शिप नॉर्थ ईस्टर्ली कोर्स पे चल रहा है। नॉर्थ ईस्टर्ली कोर्स का मतलब है इस डायरेक्शन में जा रहा है शिप। यू कैन सी द कर्सर। यस सर। सो अब बेटा अगर आप इस सेक्टर के अंदर हो, कहीं पे भी आपकी पोजीशन है, तो लाइट तो वाइट ही रहेगी। वाइट टू रेड चेंज ओवर तो इस ब्लू कलर की लाइन पे ही हो सकता है ना। सो 2000 आवर्स पे आप इसी लाइन पे कहीं ना कहीं होने चाहिए। अगर आप इसको छोड़ के और कहीं भी हो तो वाइट टू रेड तो लाइट चेंज नहीं हो सकती है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड बेटा? नो सर। ओके बताओ बेटा, अब क्या डाउट है? फिर से बताओ मुझे डाउट अपना। सर थोड़ा पीछे कीजिएगा वीडियो को। ये लो बेटा। सर ये लाइंस जब नहीं बनी हुई थी, इससे पहले का वो जो दिखा रहे थे लाइट्स ये लो बेटा। हाँ ये लो सर, यहाँ पे सेक्टर बने हुए हैं ना, ये जो लाइंस वगैरह है छोटी छोटी लंबी लंबी। हाँ बेटा ये देखो, ये वाइट सेक्टर है, ये रेड सेक्टर है, ये छोटे हैं, अभी मैं आपको जूम इन करके भी दिखा दूंगा। ये वाइट है और ये वाला ग्रीन सेक्टर है। तो जैसे इस लाइन पे होगा तो यहाँ पे अगर इसके पीछे जाएगा तो व्हाइट लाइट दिखेगी, इसके आगे जाएगा तो रेड लाइट दिखेगी, राइट सर? हाँ अगर शिप
यहां पे होगा तो व्हाइट लाइट दिखेगी, और अगर शिप यहां आ जाएगा तो ये रेड हो जाएगी, रेड दिखेगी यहाँ पे। तो मतलब एग्जैक्टली ये शिप इसी पॉइंट पे होगा जहाँ पे अगर थोड़ा सा भी पीछे गया तो व्हाइट दिखेगी, थोड़ा सा भी आगे गया तो रेड दिखेगी, राइट? यस बेटा, दैट्स राइट। ओके सर, समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। और बताओ बेटा, और कोई डाउट अभी तक? Sir, I was asking at this certain line, which light will be visible to us? ओके, जब आप इस लाइन पे होगे बेटा, एग्जैक्टली Yes, sir. Exactly on this line, which light will be visible for us? ओके बेटा, जब आप एग्जैक्टली इसी लाइन पे होगे तो Hmm. व्हाइट लाइट जो है ये डिम हो जाएगी काफी, और रेड लाइट जो है ये ब्राइट होगी। यू विल बी एबल टू सी बोथ द लाइट्स। Both lights. Okay, sir. ओके, Yes, sir. जैसे ही आप इस लाइन के इस तरफ जाओगे तो व्हाइट Yes. दिखनी बंद हो जाएगी और रेड एकदम ब्राइट हो जाएगी, और अगर Yes, आप sir. इस तरफ आ गए तो रेड बंद हो जाएगी और व्हाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। Yes, sir. तो exactly line पे हमें दोनों lights visible हो जाएंगे। हाँ, अगर आप बोलो जी मैंने यहाँ ब्रेक लगा दी और मैंने शिप को यहीं पे रोक दिया, तो इट इज पॉसिबल कि आप ये दोनों लाइट को थोड़ा थोड़ा देख पाओगे। देख पाएंगे। Yes, sir. Thank you, sir. ओके, और बताओ बेटा, और डाउट? सर जैसे क्वेश्चन में ये दे रखा है कि मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट सेक्टर जो लाइन है हमारी उसी पे 20 100 20 20 20 50 पे, अगर मैं 20 10 पे निकालूंगा तो मैं कहीं ना कहीं रेड जोन में होऊंगा, और जो मेरी ये आर्क है ये मेरी पोजीशन लाइन होगी सर, वाइट टू रेड। नहीं बेटा, अगर आप 2010 पे अपनी पोजीशन निकालोगे, यू कैन बी एनीवेयर इन दिस सेक्टर। आप यहाँ भी हो सकते हो, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, कहीं पे भी हो सकते हो बेटा। हम उसकी पीएल नहीं बना सकते हैं। आप तो कहीं भी हो सकते हो ना, इस पूरे सेक्टर में कहीं पर भी हो सकते हो आप। लाइट की बात हम कर रहे थे, लेट्स गो टू दैट लाइट। ये वाली लाइट की बात कर रहे थे बेटा हम। ये देखो, बेलिना कोटी पॉइंट लाइट आ गई। कैन यू सी दिस लाइट बेटा? यस सर। हाँ, वेरी गुड। अब देखो बेटा, आप देख सकते हो ये जो लाइट है इस सेक्टर में वाइट कलर की दिखाई देगी, इस सेक्टर में रेड कलर की दिखाई देगी, इसमें फिर से वाइट हो जाएगी और इसमें ग्रीन हो जाएगी। और जो ये लाइनें आपको बीच में दिखाई दे रही हैं इनको बोलते हैं सेक्टर बाउंड्री। इसके एक तरफ कलर ग्रीन है, दूसरी तरफ कलर वाइट है। फिर ये दूसरी सेक्टर बाउंड्री दिख रही है आपको यहाँ पे, और ये तीसरी सेक्टर बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो वैल्यूज मेंशन्ड है ये इसकी रेंज शो कर रही है सर? कौन सी वैल्यूज बेटा? सर 40 33 40 33 आर यू टॉकिंग अबाउट? डेप्थ की बोल रहा है शायद ये। डेप्थ नहीं मैं ये बोल रहे हो बेटा? ये यस नहीं सर, बेटा, ये तो डेप्थ है। सर ये तो डेप्थ है ना, मैं नीचे वाली बात कर रहा हूँ जहाँ पे 40 जो है डॉटेड लाइन में जो है। ये बेटा? जी सर। सर एक क्वेश्चन है सर। एक मिनट बेटा, एक मिनट, पहले पहला डाउट सॉल्व, फिर उसके बाद दूसरा। बेटा ये 40 भी डेप्थ है। ओके, बट ये सर उसके विद इन डॉटेड लाइन में शो कर रही है ना? बेटा कहीं भी शो हो जाए, ये 46 है, ये भी डेप्थ है, 48 ये भी डेप्थ है, ये सारी की सारी डेप्थ है, ये 26 है, ये भी डेप्थ है। ओके ओके, ये सारी की सारी डेप्थ हैं बेटा। अब अगर आपको इनकी रेंज देखनी है, ओके, तो ये रेंज आपको मिलेगी यहाँ पे। लेट मी शो यू। अगर आपके माइंड में डाउट आए कि रेंज कहाँ से मिलेगी, तो आपको रेंज मिलेगी यहाँ से। ये अगर आप इसकी डिटेल देखो, फ्लैशिंग ट्वाइस वाइट रेड एंड ग्रीन 10 सेकेंड 16 मीटर्स 12 9 माइल्स। ओके, 12 to 9 माइल्स, ये है बेटा इसकी रेंज। ओके सर। ओके, जो पहली वाली रेंज है 12 या दिस इज 12.9
12.9 miles. Okay, range will be given alongside the lighthouse. जो बीच में आपको वैल्यूज दिखाई देंगी ये सारी की सारी डेप्थ हैं। ये भी वेरी करती होगी ना सर हाइट के साथ, हाइट ऑफ हाइट के साथ। क्या बेटा, रेंज? हाँ जी सर, हाँ जी। ओके बेटा, जो लाइट हाउस की रेंज यहाँ लिखी होती है ना, इसको हम लोग इसकी नॉमिनल रेंज बोलते हैं। ये आपकी हाइट ऑफ आई के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आपकी हाइट ऑफ आई अगर कम होगी तो हो सकता है ये आपको ना दिखाई दे। ओके, उसे हम बोलते हैं जियोग्राफिकल रेंज। उसका कॉन्सेप्ट आगे आएगा, मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ओके सर। ओके, अब बोलो बेटा, एक और डाउट आया था बीच में, अब बताओ अगला डाउट। हाँ बेटा, किसी का बहुत जल्दी जल्दी डाउट आया था ना? ये सर सर एक मेरा क्वेश्चन ये था सर कि ये जो हमारी जो सेक्टर लाइट्स की जो जो पॉइंट होता है सर, जहाँ से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जा रहे होते हैं सर, सर उस पॉइंट पे सर जो आर्क ऑफ विजिबिलिटी होता है, मतलब सर अलग अलग एंगल से देखेंगे तो अलग अलग लाइट्स दिखेंगी। इज इट पॉसिबल और इट इज नॉट? बेटा मैं समझ नहीं पाया, आप बोल रहे हो हम लोग एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर हैं? यस सर, और हम लोग अगर एक एंगल से देखेंगे तो हमें एक लाइट दिखेगी, दूसरे एंगल से देखेंगे तो दूसरी लाइट दिखेगी, करेक्ट सर? ओके ओके ओके, एक मिनट बेटा, थोड़ा इसको ऐसे कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आपका शिप यहाँ पे है जी, ऐसे मैंने थोड़ा शिप को बड़ा बना दिया है सो दैट ये क्लियर हो जाए आपके माइंड में। अब आप और आपका फ्रेंड जो है, एक बंदा चला गया स्टारबोर्ड ब्रिजविंग पे और दूसरा बंदा आ गया पोर्ट ब्रिजविंग पे, राइट? यस सर। तो इट इज़ पॉसिबल कि जो स्टारबोर्ड साइड में है उसे ये लाइट वाइट कलर की दिखाई दे और जो पोर्ट ब्रिजविंग पे है उसे ये रेड कलर की दिखाई दे। इट इज़ पॉसिबल। ओके सर। एंड सर अगर इसी को एथवर्ड शिप बना दिया जाएगा तो फिर हमें कौन सी लाइट दिखाई देगी? लो बेटा, अभी बना देते हैं एथवर्ड शिप। ये जहाज तो अपने हाथ में है बिल्कुल। ये लो, अब हमने जहाज को ऐसे फिट कर दिया, ठीक है बेटा। अब मान लो आपका फ्रेंड जो है वो फॉक्सल पे है और आप स्टर्न पे हो, दोनों के पास वॉकी टॉकी है। अब आपका फ्रेंड बोलता है मुझे लाइट हाउस दिख रहा है वाइट कलर का, तुम बोलते हो मुझे लाइट हाउस दिख रहा है रेड कलर का, और तुम दोनों में हो जाती है लड़ाई, है ना? तो कोई भी नहीं जीत पाएगा बेटा। वो भी सही बोल रहा है और तुम भी सही बोल रहे हो। समझ गए बेटा? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि तो फिर हम लोग मतलब सर नेविगेशन के पर्पस से जो सेक्टर लाइट्स, तो किसको हम लोग आइडियल मान के सर हम लोग बियरिंग्स लेंगे सर? बहुत बढ़िया बेटा। अब आपको ना तो फॉक्सल पे जाना है और ना स्टर्न पे जाना है, आप तो अपनी नेविगेशन कर रहे हो ब्रिज से। तो आपका ब्रिज जहां पे है आप तो उसी कलर की लाइट को मानोगे एज फार एज नेविगेशन इज कंसर्न्ड। ओके सर। ओके ओके सर, वेरी गुड। और बताओ बेटा, और क्या डाउट है? नहीं सर, और कुछ नहीं। क्लियर हो गया बेटा? यस सर। यस सर। अब बेटा जाते जाते एक और चीज है ना, घूंघट भी उठा देते हैं। ये देखो, मैंने बोला था ना ऑब्सक्योर्ड होता है एक, ऑब्सक्योर्ड। ये देख रहे हो बेटा, ऑब्सक्योर्ड दिख रहा है यहाँ पे? जी सर। यस सर। इसका मतलब है कि जो ये वाली लाइट, ये इस लाइट की बात कर रहे हैं बेटा, ये माइन हेड लाइट है। ये बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सेक्टर में ये लाइट ऑब्सक्योर्ड है। मतलब अगर शिप यहाँ पे इस लोकेशन में होगा तो ये लाइट दिखाई नहीं देगी, यहाँ पे दिखेगी। समझ गए बेटा? समझ गए सर। इसी तरह से आप दूसरी साइड भी देख सकते हो, यहाँ पे भी आपको ऑब्सक्योर्ड सेक्टर दिखेगा। इस सेक्टर में भी ये जो माइन हेड लाइट है ये ऑब्सक्योर्ड है, यहाँ पे दिखेगी। So this sector light on the chart also we saw different sectors of the light.
PL by depth contour. Depth contours are the lines drawn on chart joining positions having same depth of the seabed. Depths on chart are called as charted depths. Charted depths are given with respect to chart datum, which is usually the lowest astronomical tide level. Observed depth must be reduced or converted with respect to chart datum before they can be compared with charted depths. A conversion, a tidal variance with respect to the chart datum must be allowed to the observed depth. Okay, beta, just take 2 minutes and go through all these points one by one. सर ये लोअर एस्ट्रोनॉमिकल टाइड लेवल ये क्या है सर? ओके बेटा, बेटा ये एक रेफरेंस है, लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड. नाउ यू सी जो टाइड्स सी में जनरेट होते हैं, दे आर जनरेटेड बिकॉज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशंस. एस्ट्रोनॉमिकल कंडीशन से हमारा मतलब है सन और मून की पोजीशन क्या है, वो डिसाइड करता है कि टाइड की हाइट कितनी होगी. लेटर ऑन व्हेन वी डू टाइड वी विल गो डीप इनटू इट. नाउ किसी भी जगह पे अगर सन और मून की ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पे लोएस्ट टाइडल लेवल बना है, तो उसे हम बोलते हैं लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड, LAT. उसी को हम लोग अपने चार्ट के रेफरेंस में यूज करते हैं. मीन्स अगर आपको किसी पॉइंट पे डेप्थ निकालनी है सी बेड की, कितनी डेप्थ है, तो हम किसके रेफरेंस पे निकालते हैं? लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड के रेफरेंस पे निकालते हैं. Is it getting clear, beta? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. Okay. Let's proceed ahead now. Let's see this practically on the chart. Let's look at it through an example. At 1400 hours, a vessel drawing 7 meters records underkeel clearance or UKC of 45 meter by echo sounder. If the tide was 2 meters above the chart datum, calculate the charted depth at that particular time. Identify on the chart at that moment if vessel could be on a depth contour. Beta, just read the question carefully. Okay. Let us say beta ये हमारा seabed है. This is the seabed. And this is the water level right now. Assume करते हैं कि ये हमारी शिप है. This is the ship. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने बताया है कि हमारा ड्राफ्ट 7 मीटर्स है. So from here to here is 7 meters. Right beta, up to here clear? Yes, sir. अब बेटा दूसरी चीज जो उन्होंने क्वेश्चन में हमें बताई है वो ये कि जो यूकेसी है, अंडर कील क्लियरेंस, वो कितनी है? 45 meters. Very 45 good. meter. 45 meters. So can you tell me what is the total depth of water or observed depth of water here? 2 meter. Very good. ये दोनों को हमने ऐड कर दिया और हमारे पास डेप्थ आ गई 52 meters. This is the observed depth. So अब बेटा ये जो observed depth होती है
किसी भी पॉइंट पे जो डेप्थ होती है वो किसके इक्वल होती है? जो भी चार्ट पे डेप्थ दी गई हो, चार्ट पे जो भी डेप्थ दी गई हो उसे बोलते हैं चार्टेड डेप्थ, शॉर्ट में CD। अगर उसमें हाइट ऑफ टाइड को ऐड कर दिया जाए, हाइट ऑफ टाइड को ऐड कर दिया जाए, HT लिख देता हूं मैं, हाइट ऑफ टाइड, तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें ऑब्जर्व्ड डेप्थ मिलेगी। सो ऑब्जर्व्ड डेप्थ 52 मीटर्स इज इक्वल टू चार्टेड डेप्थ प्लस हाइट ऑफ टाइड। अब बेटा हाइट ऑफ टाइड इस क्वेश्चन में क्या दी गई है? 2 मीटर सर अब Very good. So that means charted depth plus 2 meters should be equal to how much? 52 52. So that tells us charted depth कितनी हो गई बेटा? 50 मीटर सर। Very good. This is how we get the charted depth, 50 meters. मैं इसे यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अब बेटा जो चार्टेड डेप्थ होती है, लेट अस से दिस इज लोएस्ट एस्ट्रोनॉमिकल टाइड LAT। LAT का लेवल ये है, मैंने यहाँ मार्क कर दिया, लेट्स मार्क इट इन रेड कलर। ने सॉल्व कर लिया, हमें चार्टेड डेप्थ पता चल गई कि इस केस में चार्टेड डेप्थ 50 मीटर्स है। सो अब हम आगे चलते हैं। Identify on chart at that moment if vessel could be on a depth contour. Let's see. So first and foremost, we convert the given depth to charted depth. UKC 45 meters, draft 7 meters. This gives us an observed depth of 52 meters at that point of time. Tide 2 meters above chart datum. So the charted depth at that time is 50 meters. Now if you see on the chart, this depth contour on the chart is depth contour for 50 meters. This is the 50 meter depth contour. So if the charted depth at that time was 50 meters, that means the vessel is somewhere on this yellow highlighted depth contour, and this depth contour now acts as a PL. So is it clear now बेटा? सर फिर ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा सर ये कंटूर? हाँ बेटा, ये जो डेप्थ कंटूर है PL, ये स्पेशल PL है विच इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। इसको हम बोलते तो PL ही हैं, विच मीन्स ए पोजिशन लाइन, बट दिस इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। दिस इज द ओनली PL विच इज नॉट ए स्ट्रेट लाइन। ओके सर, एक क्वेश्चन। Celestial observations, when solved, provide a position through which to draw the PL and the direction of the PL. The position through which the PL is drawn depends on the method deployed for solving the celestial observation. The direction of the PL in every case of celestial position line is perpendicular to the azimuth of the celestial body. In case of latitude by meridian altitude, the azimuth can be either north or south. Thus, in case of latitude by meridian altitude, the direction of the PL, which is like any other case perpendicular to azimuth, is specifically east-west. Celestial PLs are represented on chart by single arrows at each of its ends. Okay, so beta just go through, take 2 minutes and just go through all these points.
Okay, now let's see this actually on the chart कि अगर हमें सेलेस्टियल पीएल दे दी जाए तो हम उसे चार्ट पे कैसे प्लॉट करते हैं. सो सबसे पहले हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे, हर एक मेथड में पीएल कैसे मिलती है हमें, और फिर हम देखेंगे कि उसे चार्ट पे कैसे प्लॉट करते हैं. लेट्स सी. Now let's look at the various methods of solving the sides, and based on each method, the position through which to draw the PL. In latitude by meridian altitude cases, the position through which to draw the PL is observed latitude and DR longitude. Direction of the PL is perpendicular to azimuth, and in this case specifically east-west. Longitude by chronometer, position through which to draw the PL is DR lat, observed long. Direction of the PL perpendicular to azimuth. Meridian method, position through which to draw the PL, observed lat, DR long, and direction is perpendicular to azimuth. Polaris or the pole star, observed lat, DR long, perpendicular to azimuth. And lastly, intercept method, we draw it through a point called as ITP, intercept terminus point, and the direction is perpendicular to azimuth. So beta, if you want, you can take a screenshot of this slide and keep it with you. This tells you कि हर एक मेथड में हमें पोजीशन लाइन को कैसे ड्रॉ करना होता है चार्ट पे. ओके सर. ओके, चलें बेटा आगे देखें चार्ट पे कैसे प्लॉट करते हैं. सर इन सब मेथड्स को आप बताओगे करके. हाँ बेटा, इन मेथड्स को हम देखेंगे. चार्ट वर्क में यूजुअली जो पीएल आपको दी जाती है वो 3 मेथड में दी जाती है, मेरिडियन ऑल्टीट्यूड, लॉन्ग बाय क्रोन एंड इंटरसेप्ट. ये तीनों मैं आपको दिखाता हूँ. एक्स मेरिडियन और पोलारिस यूजुअली चार्ट वर्क में नहीं आती है. सो ये जो 3 मेथड हैं इनको हम चार्ट पे देखेंगे कैसे प्लॉट करना है. मेरिडियन ऑल्टीट्यूड बहुत सिंपल है, जो भी आपको लैटिट्यूड दिया जाएगा वही लैटिट्यूड आपकी पोजीशन लाइन होगी. सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. लेट अस सी लॉन्ग बाय क्रोन एंड इंटरसेप्ट मेथड, हाउ इट इज प्लॉटेड ऑन द चार्ट. लेट्स सी. We'll try and understand all this through 2-3 simple examples. DR position 51 degrees 34 minutes north, 008 degrees 02 minutes west. Above DR position used for solving various celestial observations. Based on the results provided, we need to identify the method used for solving the observation and then accordingly draw the PL on the chart. The first case is star X observation gave observed long of 008 degrees 10 minutes west, azimuth 070 degrees true. In such cases where observed longitude is the result, such observations are solved by longitude by chronometer. In long by chron method, the PL is drawn through DR lat and observed long. You can see here, this is the DR lat. This one is the observed long. This one is the DR long. So it is where the DR lat intersects the observed long. Through this point, we draw the PL. Direction of the PL is perpendicular to azimuth. So if azimuth is 070 degrees true, we add 90 to it and subtract 90 to get the direction of PL as 160 degrees to 340 degrees true. And this blue line then with single arrow at each end becomes the PL for star X. So beta, have a good look at this PL, long by crone PL plotted on the chart.
समझ नहीं आया ये। ओके बेटा बताओ कि क्या चीज समझ में नहीं आई है। तो येलो वाला क्रॉस कैसे लगाया? ओके देखो बेटा क्वेश्चन में उन्होंने हमें डी आर लैटिट्यूड दिया है 5134। यस। हमने ये जो लैटिट्यूड बनाया 5134 का बना दिया। ओके उन्होंने हमें डी आर लॉन्जिट्यूड भी दिया है 8 डिग्री 7 मिनट वेस्ट। सर हमने डी आर लॉन्जिट्यूड को यहां पे ड्रॉ कर दिया 8 डिग्री 7 मिनट वेस्ट। तो ये पोजीशन क्या बन गई बेटा? डीआर पोजीशन। वेरी गुड डी आर पोजीशन आ गई हमारे पास। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड भी दिया 8 डिग्री 10 मिनट वेस्ट। हमने ऑब्जर्व लॉन्जिट्यूड यहां पे प्लॉट कर दिया। राइट ये देखो यहां लिखा है डी आर लेट एंड ऑब्जर्व लॉन्ग। दिस इज द पॉइंट वेयर द पीएल पासेस। इसको हमने यहां पे पोजीशन लाइन को ड्रॉ कर दिया। क्लियर हुआ बेटा? वो वाला पॉइंट 0702 क्या 90 माइनस क्या वो समझ नहीं आया, उसके परपेंडिकुलर है। वो भी बताता हूं बेटा। जब भी कभी हम सेलेस्टियल पोजीशन लाइन को ड्रॉ करते हैं या प्लॉट करते हैं उसकी डायरेक्शन कैसे पता चलती है? उसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है एजीमुथ से। बॉडी का एजीमुथ क्या है? एजीमुथ का क्या मतलब होता है? एजीमुथ का मतलब है बियरिंग। बॉडी की बियरिंग क्या है या बॉडी की डायरेक्शन क्या है? हमें इस क्वेश्चन में बियरिंग दी गई 070। बियरिंग हमें पता चल गई। अब जो पोजीशन लाइन है इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एजीमुथ ऑफ द बॉडी। तो अगर हमें 070 के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी हो तो वो कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे बेटा? 70 डिग्री प्लस 90 डिग्री 160 एंड 320। वेरी गुड बेटा देखो ये जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन है 160 340। ओके सर। ओके okay let's proceed ahead now and let us see the intercept position line. Let's look at the next example. Star Y observation gave an intercept of 2 miles towards azimuth 040 degrees true. When intercept is obtained as output of a celestial observation, the observation then has been solved by intercept method. In intercept method, the PL is drawn through ITP. Now in this case, azimuth is 040, intercept is 2 miles towards, DR position is here. So here is what we draw the DR on the chart. Then we draw the azimuth of the body, which in this case is 040 degrees true. Now intercept is 2 miles towards. Towards means from DR towards the body. So from DR we mark off at point 2 miles away on the azimuth line. And this is the ITP. This point is the ITP. Through this point, we draw a PL perpendicular to azimuth. So azimuth was 040. So PL direction becomes 130 to 310. And this segment represented by the black line here, this represents the intercept towards of 2 miles. ओके बेटा ये समझ में आया बेटा? इसमें कोई डाउट है? आस्क मी। सर एजीमुथ का हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा? हमेशा बेटा ऑलवेज सेलेस्टियल पीएल हमेशा एजीमुथ के परपेंडिकुलर ही होगी। सर इस केस में हम ऑब्जर्व्ड लैटिट्यूड एंड डीआर लॉन्ग नहीं लेंगे सर? बेटा इंटरसेप्ट में हमें ऑब्जर्व लैटिट्यूड नहीं मिलता है ना ऑब्जर्व लॉन्ग मिलता है। इंटरसेप्ट में हमें इंटरसेप्ट ही मिलता है। बट सर जैसे आपने बोला था उस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, उसमें तो जो हमारा रिजल्ट था उसमें ऑब्जर्व्ड लैट और डीआर लॉन्ग लिखा था सर इंटरसेप्ट के केस में। ओके 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 नहीं बेटा मैं दोबारा से दिखाता हूं। लेट मी गो बैक। ये देखो बेटा इंटरसेप्ट मेथड सबसे नीचे वाला है।
ओके सर, मैं एक्स मेरिडियन वाला सोच रहा था, सॉरी। राइट 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 राइट, क्लियर हो गया बेटा? यस सर। ओके, लेट्स गो बैक। ओके, अब मुझे बताओ बेटा, और कोई डाउट अगर आ रहा है यहाँ पे? Okay, very good. So let us see one more intercept question to make it clear. Intercept is 2 miles towards. Towards means from DR towards the body. So from DR we mark off a point 2 miles away on the azimuth line, and this is the ITP. This point is the ITP. Through this point we draw a PL perpendicular to azimuth. So azimuth was 040. So PL direction becomes 130 to 310. And this segment represented by the black line here, this represents the intercept towards of 2 miles. Now let's have a look at the last example. Star Z observation gave an intercept of 3 miles away. Azimuth 130 degrees true. This is the DR position. Azimuth is 130 degrees true. Now intercept is away from the body. So from DR, it is not towards the body, it is away from the body in the opposite direction. So we extend this azimuth line in the opposite direction. Mark of a point from DR on this line 3 miles off. This point is the ITP. This represents 3 miles of away intercept. Through ITP, we draw the PL perpendicular to azimuth. And if azimuth is 130 degrees true, direction of the PL automatically becomes 040 to 220 degrees true. So have a look at this one also beta. Let me know any doubts. Sir, this intercept concept is not clear, sir. बेटा इसमें क्या चीज क्लियर नहीं हुई आपको? सर ये पोजीशन लाइन ड्रॉ करते हैं तो सर इंटरसेप्ट जो होता है अवे और टुवर्ड्स कैसे प्लॉट करेंगे? ओके बेटा, सबसे पहले तो बेटा हम लोग डीआर पोजीशन को प्लॉट करते हैं। आप सबसे पहले ये येलो क्रॉस बनाओगे, डीआर पोजीशन चार्ट पे आ जाएगी। ओके, फिर इसके बाद हम लोग एजीमुथ को ड्रॉ करते हैं। इस केस में एजीमुथ 130 था, हमने ये डीआर पोजीशन से एजीमुथ को ड्रॉ कर दिया। एजीमुथ भी हमारे चार्ट पे आ गया। ओके, यस सर। अब आप ये देखते हो कि जो इंटरसेप्ट हमें दिया गया है वो टूवर्ड्स है या अवे है। अगर वो टूवर्ड्स हो तो आप डीआर पोजीशन से टूवर्ड्स द बॉडी, बॉडी इस डायरेक्शन में है, आप टूवर्ड्स द बॉडी जाते हो जितना हमारा इंटरसेप्ट होता है उतने माइल। और अगर ये इंटरसेप्ट अवे है तो आप डीआर पोजीशन से अवे फ्रॉम द बॉडी जाते हो, मीन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हो। कितना डिस्टेंस? जितना इंटरसेप्ट हमें दिया होता है। जब आप इतना ट्रेवल करते हो तो जिस पॉइंट पे आप पहुंचोगे उसी पॉइंट को आईटीपी बोलते हैं और पीएल उसी पॉइंट में से पास करती है। ओके सर, ओके, नाउ अंडरस्टूड सर। ओके, पीएल मतलब इस पोजीशन लाइन पे होगी, एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलेगी? नहीं बेटा, हमें सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन से एग्जैक्ट पोजीशन नहीं मिलती है, हमें सिर्फ एक पीएल मिलती है। सो ये जो ब्लू कलर की लाइन है, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, ओनली वन पोजीशन लाइन कैन नॉट गिव पोजीशन, करेक्ट सर? वी नीड एटलीस्ट 2 to 3। यस बेटा, यू आर करेक्ट। वन पोजीशन लाइन कैन नॉट गिव यू ए पोजीशन। पोजीशन निकालने के लिए कम से कम 2 पीएल चाहिए। सर मेरा एक ये लास्ट क्वेश्चन था कि अब जब हम लोग शिप्स पे होते हैं सर तो हम लोग सर एक इंटरसेप्ट से करते हैं, फिर सेकंड पोजीशन हम लोग लॉन्ग बाय क्रोन से लेते हैं सर। सो इसका क्या सिग्निफिकेंस होता है सर कि जो हाँ वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पोजीशन जो होगी वो
सेलेस्टियली करेक्ट होगी या नहीं होगी सर, क्योंकि ये अलग मेथड से लिया गया है, वो अलग मेथड से लिया गया है सर। ओके बेटा, पीएल किसी भी मेथड से ली जाए, लॉन्ग बाय क्रोन से ली जाए, इंटरसेप्ट से ली जाए, तो वो करेक्ट होगी। आपको दो पीएल मिल गई, चाहे वो दोनों किसी भी मेथड से हों, एक लॉन्ग बाय क्रोन से है, दूसरा इंटरसेप्ट से है, तीसरा लाइट हाउस की बियरिंग है, चौथा ट्रांजिट बियरिंग है। इनमें से कोई भी दो पीएल अगर आपको मिल जाएं तो आप उनको कंबाइन कर सकते हो। मींस जहां पे वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी वही आपके शिप की पोजीशन होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों पीएल एक ही मेथड से होनी चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके सर, ओके सर। ओके, हाँ बोलो बेटा। सर इस पोजीशन ब्लू वाली जो पोजीशन लाइन है, इस पे ऐसा कोई भी पॉइंट जो कि 3 माइल्स अवे एंड 90 डिग्री होगा, तो वो तो एक ही पॉइंट होगा ना सर। तो हम ऐसे क्यों बोल रहे हैं पूरी पोजीशन लाइन पे कहीं भी पोजीशन हो सकती है? जो इस पॉइंट को ओके, सेटिस्फाई करे वो तो एक ही पॉइंट है ना सर, तो वहीं होगा पोजीशन तो। नहीं बेटा, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो है आईटीपी, वो हमारी पोजीशन नहीं है, वो इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट है। और ये इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट क्या होता है? ये इंटरसेप्ट टर्मिनल पॉइंट हमें सिर्फ ये बताता है कि पीएल कहां से पास करेगी, ये हमारी पोजीशन नहीं होता है। ओके, हमारी पोजीशन तो इस लाइन के ऊपर कहीं भी हो सकती है, और इनफैक्ट इस लाइन के बाहर भी ये एरो ये बता रहा है कि इस लाइन को अगर आगे भी एक्सटेंड कर दिया जाए तो हमारी पोजीशन आगे भी हो सकती है। ये कंडीशंस मतलब पीएल के लिए है ना कि पोजीशंस के लिए? यस बेटा, दैट इज राइट। सारी की सारी कंडीशंस पोजीशन लाइन के लिए हैं, पोजीशन के लिए नहीं। ओके ओके, वेरी गुड। सो अब ये सब समझ में आ गया बेटा, और कोई डाउट? Reliable electronic navigational aid like GPS, which may provide the position in its coordinates of latitude and longitude. A fixed position or an observed position is a confirmed or validated position. It's represented on the chart with a symbol of a dot and the circle surrounding it. The dot in the center represents the position of the ship, and if we want to indicate the time for which the fix has been marked, it can also be indicated against the symbol as you can see on your screen out here. बेटा, इसमें हमने अभी पोजीशन सर्कल्स का कॉन्सेप्ट नहीं किया है। ये मैंने जानबूझ के आपको नहीं कराया है, क्योंकि मैं पहले आपको अभी तक जो हमने किया है ना, इस पे एक असाइनमेंट देने वाला हूँ, एक्सरसाइज देने वाला हूँ। जब आप उन कॉन्सेप्ट्स को चार्ट पे प्लॉट करके पक्का कर लोगे, फिर हम पोजीशन सर्कल के कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। सो जस्ट गो थ्रू दीज पॉइंट्स एंड लेट मी नो इफ यू हैव डाउट्स। Sir, I have one doubt. Sir, let's say we are given a situation where they have said that the ship position is marked 3 miles at this bearing from this particular buoy. So will that be a fix or that will be a DR? बेटा, बॉय से आपको उन्होंने बियरिंग और डिस्टेंस ऑफ दे दिया? जी सर। ओके, अब बेटा बस इसमें एक चीज मैं बोलूंगा। नॉर्मली जो बियरिंग और डिस्टेंस लिया जाता है, हम बॉय को अवॉइड करते हैं। इट इज टेकन फ्रॉम ए आइलैंड और ए लाइट हाउस, बॉय को अवॉइड किया जाता है। बट जब आपको बियरिंग और डिस्टेंस मिल गया और आपने उसे चार्ट पे प्लॉट कर दिया, तो ये एक फिक्स होगी, इट विल बी ऑब्जर्व्ड पोजीशन। ओके ओके, ठीक है सर। अब आप कोई किसी के माइंड में डाउट आ सकता है कि बॉय को क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि बॉय जो है बेटा, ये नेचुरली फिक्स्ड नहीं होता है। इसको हम लोग एंकर के साथ फिक्स करते हैं सी बेड में, एंड देयर आर चांसेस कि अगर बहुत स्ट्रॉन्ग रफ वेदर हो या करंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो ये बॉय ड्रिफ्ट कर सकता है। ओके, यस सर, अंडरस्टूड सर। ओके बेटा, लेट्स मूव अहेड। The next one is
DR position or the dead reckoning position, which is obtained by factoring in only the ship's displacement caused because of the course she steered and the engine distance that she has covered from a last known fix. So to mark the DR of the vessel, we must know the last known fix. We must know the course or courses steered during that interval since the last known fix and the engine distance that has been covered. DR position on the chart is represented by a cross. And if the time has to be represented for the DR, it can also be marked next to the symbol. DR position does not factor in effect of any external force like current or wind experienced by the ship. Okay, so just go through these points, beta. Let me know if there is any doubt. थर्ड लाइन ओके बेटा, इसमें क्या डाउट है? तो करंट और विंड ऐड हो गई तो डीआर मिलती है ना सर, इसमें ये डज नॉट क्यों लिखा हुआ है फिर? नहीं बेटा, करंट और विंड अगर आपने ऐड कर दिया ना तो फिर ये एस्टिमेटेड पोजीशन बन जाती है। बिना करंट और विंड के जो पोजीशन हमें मिलती है वो होती है डीआर। ओके सर, आर यू अंडरस्टैंडिंग नाउ बेटा? सर बट जैसे कि मैं शिप चला रहा हूँ, इसमें लिखा है कि बाय द कोर्स स्टीयर्ड एंड द इंजन स्पीड। तो जैसे मैं चला रहा हूँ तो मेरे को ये दोनों फैक्टर तो लग रहे हैं ना, मेरे को विंड और करंट दोनों लग रहे हैं, तो मेरी पोजीशन तो वो ईपी और डीआर में फर्क कैसे रह गया सर? ओके बेटा, ईपी और डीआर में फर्क तो बड़ा सिंपल है। डीआर में हमने विंड और करंट का इफेक्ट कंसिडर नहीं किया है, अगर कंसिडर कर लेंगे तो वो ईपी बन जाएगी। ये तो फर्क है दोनों में, फर्क समझ आ गया? तो सर जैसे मैं बोलूँ कि मैं 292 जा रहा हूँ और 10 नॉट की स्पीड से जा रहा हूँ, तो अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो ये मेरी डीआर पोजीशन होगी जो मेरे 1 घंटे बाद मिलेगी। और अगर मैं विंड और करंट अगर लगा दूं जिस भी साइड से लग रहा है, अब मेरे को वहां पहुंचना चाहिए था, तो मेरी ईपी पोजीशन वो हो जाएगी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, सही बोल रहे हो एकदम। ओके सर। ओके ओके, सो वी हैव डन डीआर आल्सो, so let's give it a break beta, we are almost at 25. The position of a ship that is obtained by intersection of two or more position lines, intersection of two or more position circles, intersection of one position line and one position circle. I'm sure you would have watched the earlier videos on position lines and position circles and would by now be comfortable with the concept of PLs and PCs. Or a position that is obtained by a reliable electronic navigational aid like GPS, which may provide the position in its coordinates of latitude and longitude. A fixed position or an observed position is a confirmed or validated position. It's represented on the chart with a symbol of a dot and the circle surrounding it. The dot in the center represents the position of the ship, and if we want to indicate the time for which the fix has been marked, it can also be indicated against the symbol as you can see on your screen out here. Okay, so this is the fix of the ship beta. Any doubt up to here? No sir. नहीं सर। Okay, very good. The next one is DR position or the dead reckoning position, which is obtained by factoring in only the ship's displacement caused because of the course she steered and the engine distance that she has covered from a last known fix. So to mark the DR of the vessel, we must know the last known fix. We must know the course or courses steered during that interval since the last known fix and the engine distance that has been covered. DR position on the chart is represented by a cross, and if the time has to be represented for the DR, it can also be marked next to the symbol.
DR position does not factor in effect of any external force like current or wind experienced by the ship. This is also clear, beta. Any doubts? No, sir. Very good. The next is estimated position. It is the position obtained by factoring in ship's displacement because of the course steered, engine distance covered, together with the estimated current and or wind that may have been experienced by the vessel during that interval. EP on the chart is marked with a triangle or a square with a dot in the center, and if the time has to be indicated, that can also be mentioned against the symbol. EP factors in the estimated effect of current and wind experienced by the vessel. So now, amongst all these, undoubtedly, an observed position or the fix of the vessel is the actual position of the vessel that has been observed by definitive position fixing means. Next in the order of accuracy would be the estimated position, and last would be the DR position. We shall be using these positions depending on the information that is available in the same order of accuracy. If we have a choice, fix would be of the first topmost priority, followed by EP, and if none of them are available, of current on the ship's track. What is current? Current is a continuous directed flow or movement of seawater because of varied causes like difference in temperature, difference in salinity, etc., etc. Moving seawater causes the displacement of objects floating in it as it carries them along. So the floating objects, which are freely floating in water, would be carried with the water as the water flows because of the current. In the absence of any external factor like current, the ship's track or displacement over the ground shall be same as its displacement through water. So we must understand the difference between track through water and track over the ground. ओके बेटा, यहां तक कोई डाउट? Okay, very good. So let's move ahead now. See it on the chart. Difference between track through water and track over the ground. Now, let's understand this thing through the simple illustration. We have a vessel which is at position A at 0800 hours. It steers a course of 070 degrees true at an engine speed of 11 knots. There is no wind, no current, and we need to plot and obtain the DR of the vessel and the fix of the vessel at 1000 hours. So we plot the 0800 hours fix on the chart, as you can see. Now, from the last known fix, which is 0800 hours, if we apply the ship's displacement vector because of our own propulsion, that is the CTS and the engine distance, that shall give us the DR, as we have already discussed under the DR explanation. So from A, we draw the CTS of 070 degrees true. In chart work, the CTS is always marked with single arrow, and you please have to respect this convention of single arrow to represent the CTS line. On this CTS line, from A, if we mark off engine distance for 2 hours, which shall be 11 into 2, that is 22 miles, we get point B. Point B is obviously the DR at 1000 hours. Now, as there is no other displacement vector acting on the ship than her own propulsion, obviously her track over the ground would be same as the track through water. What we have plotted is the track through water, and in this case, the track over the ground shall also be the same. So actually the vessel would be at point B at 1000 hours. So point
This track over the ground is represented in chart work by course made good and distance made good. And this particular vector is represented by two arrows. You can see the two red arrows coming on the same track. That means track A to B, besides being a CTS track or track through water, is also a course made good track and track over ground. So बेटा इसको ध्यान से देखो, ये समझ में आ गया? Any doubts up to here? Sir, this is because there is no current and wind, that's why. Right beta, that's right. Okay, sir. Okay, let's move ahead now. So in this particular case, CMG is same as CTS, DMG, distance made good, is same as engine distance, and this position B happens to be the also fix of the vessel at 1000 hours. Position B is both DR as well as fix. Then we have track through water, which is represented by CTS and engine distance. And we have track over the ground represented by CMG and DMG, though both have been same in this particular case. Now, before we discuss the effect of current, we need to understand the terms that are used to describe current. The direction of the current is represented by what is called as set. Set is the direction in which the water flows. That is, if we say the current is setting south or current is setting 180 degrees true, that means the water is flowing from north to south. The rate of current is the speed of current. It is expressed in knots. The drift of the current is the distance through which a freely floating object at rest relative to sea water be drifted in a given period of time because of the current. Obviously, the drift, if we have to obtain in a certain period, it shall be equal to rate of the current in knots multiplied by time in hours, and what will get drift shall be in nautical miles. Now, with these terms having been discussed, let us look at effect of current on the ship's track. This is clear beta, set of the current, rate and drift. Yes, sir. Okay, very good. Now, with these terms having been discussed, let us look at effect of current on the ship's track. When the vessel steams, vessel experiences the displacement vector because of her propulsion, and this displacement vector because of her propulsion acts both through water as well as over the ground. And this displacement vector is represented by course to steer as its direction and engine distance as its magnitude. If this vector is applied to the last known fix, we have already discussed this, it shall give us the vessel's DR at the end of the steaming period. If the ship also experiences current, an additional force vector is caused, represented by set and drift during the interval. This additional force vector, because of the current, causes displacement only with respect to ground or over the ground and not through water, because the water and ship, they float together or drift together because of the current, and so there is no displacement of the ship in relation to water caused by the current. Thus, ship experiences two displacement vectors over the ground. Its track over the ground shall in such cases be along the resultant of the two vectors. So any doubts up to here beta?
we have just discussed to a simple example. We have a vessel at position A at 0800 hours. You can see on your charts. It steers a course of 070 degrees true at an engine speed of 11 knots. The vessel experienced current setting south at 3.8 knots. Now, by plotting, we need to obtain DR and fix. We have already seen in one of the earlier examples wherein there was no current or wind, the DR and fix at 1000 hours happen to be same. Let's see what happens in this particular case. Now, through A, if we plot our ship's displacement because of our propulsion, then that will be CTS drawn through A, represented by single vector, distance marked off for 2 hours 22 miles, position B, this becomes the DR of the vessel at 1000 hours. This we have already discussed earlier as well. Now to see how does the current affect the vessel's displacement over the ground, for one time at least, let us split this into two distinct parts. Two displacement vectors, one because of ship's propulsion, other because of current, acting simultaneously, but let's assume they act one at a time, each acting for their respective 2 hours. So if only the ship's propulsion vector, CTS, and engine distance vector acts for 2 hours, then the vessel is expected to shift from or displace from position A to position B. So at 10 o'clock, you would expect the ship to be at B. Now once at B, let us assume the engines are stopped. Ship is in complete rest in relation to the seawater, surrounding seawater. And now the current sets in, setting south at 3.8 knots. Now, as the water starts flowing southwards, the vessel would also drift southwards. So the vessel shall start drifting with over the ground in this direction as represented by the green vector. Now, the green vector represented by 3 arrows is the current vector, and this is the standard 3-arrow notation that is used in chart work. If the vessel drifts for 2 hours, then she would have drifted through a distance of 3.8 into 2 equal to 7.6 miles, and she would reach point C. Now that means 2 hours of propulsion vector, 2 hours of current vector, both acting for 2 hours each. We expect the ship to reach point C. So C would be the position of the ship at the end of 4 hours in which both vectors have acted one by one. In our case, both these vectors are acting simultaneously. So both are acting for 2 hours each, but not one at a time, but simultaneously. So the effect would still be the same. And at the end of 2 hours, with both vectors acting simultaneously, the vessel would be expected to be at C. That means from 8 o'clock to 10 o'clock, so C becomes my fix at 1000 hours. From 8 o'clock to 1000 hours, the track over the ground would be represented by line AC. This track over the ground we refer to as course made good as its direction and distance made good as its magnitude. It's represented by 2 arrows. So now in chart work, the CTS vector is represented by 1 arrow, current vector is represented by 3 arrows, and course made good vector is represented by 2 arrows. So beta, have a good look at the diagram. Let me know if you have doubts in any point. सर एक बात पूछनी थी सर। बोलो बेटा। ये जो करंट लग रहा है जब अपन ए पॉइंट से चले सर बी पॉइंट के लिए, राइट, जब 8 बजे अपने जब पैसे चालू किया और 10 बजे हम बी पॉइंट पे पहुंच गए, तो जो करंट था वो थ्रू आउट लग रहा था। इसमें तो ऐसे बोल रहे हैं सर वो सर के जब अपने ए से गए बी तक और वहां पे जाके रुक गए और फिर उसके नेक्स्ट 2 आवर अपने को ये करंट लगा है। ओके,
वो बेटा इसलिए बोल रहे हैं ताकि ये चीज़ आसानी से समझ में आ जाए। अब जब भी हमारे पास दो वेक्टर होते हैं और हमें उनको ऐड करना होता है, चाहे वो दोनों एक साथ लगे, लेकिन उनको ऐड करने के टाइम पे एक के बाद दूसरे को ऐड किया जाता है। जैसा हमने स्कूल में भी +1 +2 में वेक्टर एडिशन में किया था। तो वेक्टर एडिशन की ये प्रॉपर्टी होती है कि चाहे वेक्टर एक साथ लग रहे हों, आप उनको किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर दो, किसी भी ऑर्डर में अप्लाई कर दो, उनका रिजल्टेंट सेम रहता है। तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये दोनों वेक्टर एक साथ लग रहे हैं, लेकिन उनको कंबाइन एक साथ नहीं किया जा सकता, इसलिए हमने एक के बाद दूसरे को लगाया है। ओके सर, बट सर मेरा सवाल ये था, जो ये करंट है वो अपन ने पूरी वॉयज में फेस किया ना सर? यस बेटा, दैट्स राइट। ओके सर, दैट्स राइट। फिर सर वो 4 आवर क्यों बोला सर ने अभी? 4 आवर नहीं बेटा, 2 आवर्स। 2 घंटे के लिए ही हमारा CTS वेक्टर लगाया है हमने, और 2 घंटे के लिए ही करंट वेक्टर लगाया है। ओके सर, नहीं अभी शायद मैंने सुना था 4 आवर बोला था सर एक जगह पे सर ने। नहीं बेटा, 4 आवर्स यहाँ पे नहीं आ रहा है कहीं। इट इज़ 2 आवर्स, CTS वेक्टर फॉर 2 आवर्स, करंट वेक्टर फॉर 2 आवर्स, और जो तीसरा वेक्टर आया है A to C, जिसको हम कोर्स मेड गुड वेक्टर बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो फॉर 2 आवर्स। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, लेट्स मूव अहेड नाउ। यस सर। Now, the direction from A to C becomes course made good, which in this case is 091 degrees true, and the distance or magnitude of AC is 20.6, which is the distance made good. Since this 20.6 miles is the distance made good in 2 hours, so the speed made good would be 10.3 knots. So now please remember in this case that each side of this triangle is for the same duration. Here the engine distance was for 2 hours, drift was for 2 hours, so obviously this DMG would also be for 2 hours. So C is the fix at 1000 hours, B is the DR at 1000 hours, and the vessel's position will shift along the line AC, but her CTS does not change. CTS remains 070 degrees. So you see, when the vessel reaches here, her heading is aligned in this direction, that is 070, but her position is shifting along this CMG line. When she reaches here, everywhere the heading is same as 070, but position is shifting along the CMG line. So beta, this is also clear? यस सर, बट सर एक बात पूछूं सर? बोलो बेटा, जो पूछो। लास्ट टाइम आपने दिखाया था सर, जो जैसे आपने लास्ट लेक्चर में जो आपने सेम कंडीशन था, सेम सिनेरियो था, लेकिन उसमें और इसमें चेंज क्या है सर? जो बेटा पहले हमने बिना करंट के देखा था उसमें और इसमें? नहीं सर, जो लास्ट लेक्चर में अपन ने करंट के साथ भी देखा था ना सर, करंट ट्रायंगल। हाँ हाँ, वो और ये बिल्कुल एज इट इज सेम है सर। या दैट्स राइट, दे आर सेम ओनली। ओके सर, दे आर सेम ओनली बेटा, यही चीज तो हमने पिछले लेक्चर में भी की थी, सेम थिंग। ओके सर, मैं सोच रहा था सर इसमें कुछ डिफरेंट है क्या? नहीं बेटा, नहीं, वो तो बोला कि सर हमने इसको रिपीट करना है एक बार, तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यही चीज हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी। ओके सर, सॉरी सर। ओके, ऑल राइट, सो लेट्स मूव अहेड नाउ। यस सर, प्लीज। Yes, sir, please. Now let us look at a possibly different scenario. The vessel is at position A at 0800 hours. She needs to reach position C at 1000 hours.
Position C is her destination position, could be anchorage, pilot, boarding ground. Now that means the vessel needs to make a track over the ground, which is represented by AC in 2 hours. अब देखो बेटा, अब इसे ध्यान से समझना है आपने। जो इससे पिछली स्लाइड में हमने देखा था, हमें अपना CTS पता था कि हम 070 कोर्स स्टीयर कर रहे हैं, हमें करंट भी पता था और हमें अपनी फाइनल पोजीशन को निकालना था। पोजीशन सी हमें पता नहीं थी, उसे हमने फाइंड आउट किया है। अब हमने सिनेरियो को थोड़ा सा चेंज कर दिया है। अब हमें पता है कि हमें पोजीशन सी पे पहुंचना है। लेट अस से यहाँ पे पायलट बोर्डिंग ग्राउंड है, तो हमने यहाँ से पायलट को पिकअप करना है। तो हमें पता है कि हमें A से C तक जाना है, ये ऑलरेडी पता है हमें। रेड कलर का जो वेक्टर है ये पता है। और अगर वो हम यहाँ पे करंट भी अगर हमें दे दिया जाए क्वेश्चन में कि ये करंट इस एरिया में एक्ट कर रहा है, तो हम अपना CTS निकाल सकते हैं। सो क्वेश्चन में चेंज आ गया। पहले CTS पता था, हमने CMG निकाला। अब हमें CMG पता है और अब हम CTS को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सो लेट अस सी। So AC would represent the course that the vessel will have to make good and the distance that the vessel has to make good in 2 hours. Since A and C are the same points as in the previous discussion, therefore CMG that has to be done by the vessel is 091 degrees true and the DMG is 20.6 nautical miles. The current experienced by the vessel is same as in the previous case, that is setting south at 3.8 knots. The master wishes to know what course should the vessel set from A and what engine speed she should be doing so that in 2 hours she is able to reach her destination at point C. So basically everything is same. So we could consider this in the reverse order to what we had earlier done. Now vessel wants to reach from A to C, highlighted by this black line, and this is your track over the ground or the CMG and the DMG vector represented by 2 arrows. Now she experiences current setting south at 3.8 knots. So if we have to reproduce this triangle, that means I'll have to draw the current north of C. Though the set given in the question is south, but what we'll have to do is current, if we have to draw at C, we draw it in the opposite direction, highlighted by this black line now, and represented by 3 arrows pointing southwards as before. So now this is the CMG DMG vector, this is the current vector, each of them is for 2 hours. Obviously, then A to B vector would be the CTS and engine distance vector, and we get CTS of 070 degrees true and engine distance of 22 miles in 2 hours. That means engine speed of 11 knots. बेटा ये एक मेथड है CTS को निकालने का, ये मेथड है। इसमें हमने वही ट्रायंगल को यूज किया जो पीछे से हमने पिकअप की थी, बट इसमें अब हम एक चेंज लेके आएंगे। एक्चुअली चार्ट वर्क में हम ऐसा नहीं करते हैं। सो चार्ट वर्क में जैसा हम करते हैं अभी हम देखेंगे। Now there is nothing wrong with this working mathematically, it's perfectly in order. But in chart work, we do not, I repeat, we do not reverse the direction of current. So if it was setting south, we would prefer to draw the current setting south only. And to achieve that, we change the point of application of current. So we apply current instead of C, we apply current at A, like this. At A, we have applied current for 2 hours, setting south, and drift of 7.6 miles. This gives us a point D. Now, if we join point D to C, as you can see, what we see here is that A, B, C, D is a parallelogram. Obviously, then A, B, and DC are parallel to each other and also equal in magnitude. So obviously,
since it's a parallelogram, therefore D to C represents the CTS and D to C distance represents engine distance in 2 hours. So the CTS is 070 degrees true, engine distance is 22 miles in 2 hours, giving us a engine speed of 11 knots. So in chart work, if we have CMG and we have to get the CTS, we would draw the current at the starting point of the CMG line and draw the triangle as the lower part of the parallelogram represents. Now, these two scenarios, one wherein we had drawn the triangle which is representing the upper part of the parallelogram, and the one representing the lower part of the parallelogram, these are two different possible scenarios at sea, and accordingly the processes carry different names. One possibility could be that we are given the course to steer and we have to find the CMG. When the CTS is known and CMG is to be found, we refer to that as allowing for current. And whenever we have to allow for current, the triangle would be completed as represented by this triangle in the upper part of the parallelogram. That means we'll draw the CTS track, and at the final end point of the CTS track, or if you want to call it as the DR position, we shall be drawing the current at this point and completing the triangle as we had seen earlier to get the CMG and the DMG. The other thing could be that we are given the CMG and we need to find the CTS. In such a scenario, we call it as counteracting current. And when we have to counteract the current, the triangle shall be drawn as the triangle in the lower half of the parallelogram. When CMG track is given, the current will be drawn at the starting point of the CMG line. It will be drawn at the starting point of the CMG line, and the triangle will be completed as in the lower half of the parallelogram. So this is the difference, how the triangles are completed. One for allowing situation, other for the counteracting situation. So have a good look at the diagram, beta. Let me know any doubts at any of the points. No, sir, no doubt, sir. Okay, very good, beta. So this is what we had done in the last lecture also. So हमने इसको revise कर लिया है. Let us now proceed ahead. Now, there can also be situations wherein on ship, a vessel wishes to estimate the current that the vessel is experiencing, or in exam, the current set and rate is to be calculated. If you look at this triangle, vector triangle, which we are already familiar with now, if you see, current is the vector joining the DR position to its fix. It's the vector joining the DR position to the fix. So as you can see in the vector triangle, direction from DR to fix is the set of the current. So in this triangle, you can see the direction from fix to DR to fix is the set of the current, and the magnitude of this vector or the distance from DR to fix represents the drift of the current during the interval for which the triangle has been made. Again, it's being repeated here that every vector of the triangle has to be for the same duration. So if this triangle was made for 2 hours, so this drift of 7.6 miles would be for 2 hours. That means the rate of current would be 3.8 knots. So we need to be very, very careful about this also, because this is part of some questions wherein they would expect us to calculate the set and rate of current. That means in such scenarios, we'll have to find out the DR and fix of the same time, and using the DR and fix, we can find out the set and rate of current. So is this concept clear, beta? DR to fix is the set and rate of the current. Yes, sir. Yes, sir.
Okay, very good. Yes, sir. Clear, sir. Okay, beta, very good. Let's proceed ahead. Now let us appreciate the elements represented by AB. So AB is the track through water represented by CTS and engine distance. Second vector is the current vector represented by set and drift represented by BC in this case. And the third vector is track over ground represented by CMG and DMG, which is represented by vector A to C in this diagram. CTS vector represented by one arrow, current vector represented by three arrows, and course made good vector represented by two arrows. It's imperative that in this vector triangle, every vector has to be for the same duration. So whatever is the duration of one vector out here, all the vectors will have to have the same duration. Now, since there are three vectors, each having a direction and magnitude, there shall be 6 elements of the vector triangle. These elements are course to steer, engine speed, from which we get the engine distance, set and rate of current, from rate we get the drift of the current, CMG and SMG, from wherein you get the distance made good after you integrate them with time. To be able to complete the vector triangle, please remember you need to have minimum 4 elements out of 6. So if you have to complete the triangle, please source 4 elements, minimum 4 elements, and then only the triangle can be completed. If you do not have 4 elements, then no way can you be completing the triangle. The missing 2 elements can be then read off from the completed triangle. What is the physics law used in this vector triangle? The physics law used in this vector triangle is triangle law of vector addition, which states that if the 2 sides of a triangle taken in the same order or same direction represent 2 vectors, then the third side of the triangle taken in the opposite direction represents the resultant of the 2. So if you see here, CTS and current vector, they are in the same order or same direction because both are clockwise. And the CMG vector is anti-clockwise. It's the third side of the triangle taken in the opposite direction. So the resultant of track through water and the current is the track over the ground. So beta, just go through these points one by one in your mind. Let me know any doubts coming anywhere. सर इसका क्या मतलब है? The missing 2 elements can then be read off from completed triangle. ओके बेटा, ये ट्रायंगल जब हमें चार्ट पे बनानी होती है किसी भी क्वेश्चन में, मान लो ये ट्रायंगल हमने बनानी है, तो क्वेश्चन में हमें टोटल 6 चीज़ों में से 4 चीज़ें जो है मिनिमम बता दी जाएंगी। क्वेश्चन में वो हमें 4 चीज़ें बताएंगे, वो कोई भी 4 चीज़ें हो सकती हैं। अब जब आपको 4 चीज़ें मिलेंगी तो आप इस ट्रायंगल को अपने चार्ट पे प्लॉट कर पाओगे। और टोटल 6 चीज़ें हैं इसमें, सो 2 चीज़ें मिसिंग थी जो क्वेश्चन में उन्होंने हमें नहीं बताई। वो 2 चीज़ों को हम ट्रायंगल बनाने के बाद चार्ट से पता कर सकते हैं, रीड आउट कर सकते हैं। ओके सर, जैसे कि उसमें CMG एंड DMG। हाँ बेटा, अगर आपको CMG और DMG नहीं दिया है, उन्होंने ये 2 चीज़ें नहीं दी हैं, तो आप ट्रायंगल कंप्लीट कर लोगे और कंप्लीट करने के बाद ये दोनों चीज़ें चार्ट से आप रीड कर लोगे। ओके सर, गॉट इट सर। ओके,
और बताओ बेटा, और डाउट? क्लियर सर। Very good beta. Let's proceed ahead then. Now let us understand. Okay. बेटा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अभी हमने करंट का कॉन्सेप्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है ये विंड का कॉन्सेप्ट है। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द विंड, व्हाट इज द लीवे, हाउ टू अलाउ, हाउ टू काउंटरैक्ट। सो अब मुझे ये बताओ, हमारे पास अबाउट 7-8 मिनट बचे हैं, और you want to continue with the wind effect now, or is it okay? Shall we continue, or you want to keep it for the next lecture? Continue, sir. Very good beta, let's continue. Wind and its effect on the ship's track. Wind is a continuous directed flow or movement of atmospheric air because of different atmospheric pressure over different regions. Direction of the wind, the direction from which it comes. That is, northerly wind means wind is blowing from north towards south. अच्छा बेटा, अगर मैं बोलूं कि नदरली विंड है तो इसका मतलब है विंड इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ। अगर मैं बोलूं नदरली करंट है तो उसका क्या मतलब है? Wind is setting towards north. नदरली करंट का बोलेंगे तो सर द करंट इज कमिंग फ्रॉम साउथ। वेरी गुड बेटा। सो इस चीज का ध्यान रखना है, यू शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। विंड की डायरेक्शन हमेशा वो डायरेक्शन होती है जहां से विंड आ रही है, और करंट की डायरेक्शन हमेशा वो डायरेक्शन होती है जहां करंट हमें लेके जा रहा है। ओके, ऑल क्लियर? यस सर। वेरी वेरी गुड बेटा। So please remember, the convention used for naming the direction of the current is opposite to the convention used for naming the direction of wind. Wind affects the ship's track through water as well as over the ground. The track through water allowing the effect of wind is referred to as effective course or leeway track. So once we allow for wind on the course that the ship is steering, the track that you obtain will be referred to as effective course track or the leeway track. Angle between the course to steer track and the leeway track is referred to as leeway. In chart work, effect of wind on ship speed is intentionally left out because of limitations on number of elements of the vector triangle. So beta, just go through these points. Let me know your doubts in any of them. सर लास्ट वाले में से चार्ट वर्क विंड ऑफ इफेक्ट शिप स्पीड इज इंटेंशनली लेट आउट का मतलब क्या है सर? ओके बेटा, बेटा इसका मतलब ये है कि जब भी हम चार्ट वर्क में विंड को कंसिडर करते हैं, किसी क्वेश्चन में हमें उन्होंने विंड दे रखी है, तो उस विंड की वजह से हमारी स्पीड में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी हम चार्ट वर्क करते हैं, ये चीज़ हम मान के चलते हैं कि जितनी भी विंड हो, उस विंड से हमारी स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्पीड रिमेन्स अनचेंज्ड। ये मतलब है बेटा। ओके सर, स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं है। राइट, विंड का इफेक्ट जो है ये स्पीड पे नहीं आएगा चार्ट वर्क में। ओके सर। Okay, let's proceed ahead. However, practically it may not be of much concern for the simple reason that very seldom would we have wind alone and no current, because if the wind blows over the surface of sea for some time, the least it would give rise to are the frictional currents. So when wind and current often coexist, so even if the effect of wind has not in isolation been considered, it will automatically show up when the current is estimated, and as far as the ship is concerned, it will be taken care of. So that is if they coexist. However, if you talk of a hypothetical situation where there is only wind and no current, then yes,
the effect of wind on the speed of the ship in chart work is intentionally left out. But again, I would say in practical considerations, it may not be a serious omission. Allowing wind is the term used when we know our CTS and we are required to find our effective course or the leeway track after factoring in wind. How do we allow for wind? Let us see it through a simple illustration. The vessel is at position X, is steering a course along XY track, experiencing wind which is southerly as shown by the wind arrow. Now we have to allow the given leeway. Now the leeway, when you allow for wind, the leeway must be allowed to the lee side of the vessel or should be allowed downwind, whichever way you are convenient, it's comfortable for you to remember. Now in this case, the wind is blowing from the starboard side of the vessel. So the port side of the ship is the lee side, or the starboard side is into the wind side and port side is the downwind side. So whichever way you are comfortable, you may remember it. So in our case, the leeway shall be applied downwind as shown in the diagram. It is applied on the downside or downwind side or lee side. And this track XZ that we are getting is the effective course or the leeway track. The magnitude of this leeway track shall be engine distance, which in the absence of wind was the magnitude of the CTS track. So beta, is this clear? सर जो लीवे ट्रैक होगा उस पे भी एक ही एरो लगाएंगे सेम लाइक सीटीएस? यस बेटा, CTS का और लीवे ट्रैक का या इफेक्टिव कोर्स का एक ही सिंबल है, दोनों को हम सिंगल एरो से ही शो करते हैं। फिर सर आइडेंटिफाई कैसे होगा कौन सा क्या है? ओके बेटा, वो इसलिए नहीं ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि नॉर्मली चार्ट वर्क में हम लोग CTS को शो नहीं करते। जब भी कभी विंड होती है ना, तो हम सिर्फ लीवे ट्रैक को ही शो करते हैं, CTS को चार्ट प्लॉट पे शो नहीं करते हैं। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने ये दोनों बनाए हैं, बट एक्चुअल प्लॉटिंग जब हम करेंगे तो CTS को चार्ट पे शो नहीं करेंगे, सिर्फ लीवे ट्रैक को या इफेक्टिव कोर्स को ही शो करेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। बट सर CTS को ड्रॉ नहीं करेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसे आएगा सर? बेटा CTS मैग्नीट्यूड में तो कोई फर्क ही नहीं है, CTS का भी मैग्नीट्यूड उतना है, लीवे ट्रैक का भी मैग्नीट्यूड उतना है, तो मैग्नीट्यूड में तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। ओके सर, ओके सर, ओके सर, गॉट इट सर। ओके, सो इट इज बेसिकली हमारा जो शिप है वो XY ट्रैक पे चल रहा था, हमें सदरली विंड मिली जिसने हमें पुश करना शुरू कर दिया, तो उस पुश करने की वजह से शिप अब X to Z वाले ट्रैक पे चल रहा है। हेडिंग हमारी X to Y डायरेक्शन में ही होगी, लेकिन हम चलेंगे X to Z ट्रैक पे। इस ट्रैक को लीवे ट्रैक या इफेक्टिव कोर्स बोला जाता है, और इन दोनों में जो एंगल होता है उस एंगल को हम लोग लीवे एंगल बोलते हैं। ओके बेटा, क्लियर? हाँ बोलो बेटा। सर ये CTS एंड ट्रू कोर्स स्टीयर्ड दोनों अलग अलग चीजें हैं सर वैसे तो? नहीं बेटा, CTS और ट्रू कोर्स स्टीयर्ड एक ही चीज़ है, इनमें फ़र्क नहीं है। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग नाम को यूज़ किया जाता है, मैं आपको बताऊंगा, पर है ये दोनों एक ही चीज़। सर टू स्टीयर एंड स्टीयर्ड तो अलग ही हुआ ना सर, मतलब स्टीयर करना था वो, लेकिन हाँ बेटा, किया वो तो अलग ही हुआ सर, ये तो ये सेम कैसे हो सकता है? ओके बेटा, ओके। देखो बेटा, ऐसा है, अगर तो आप अलाउ कर रहे हो, लेट अस से आपको उन्होंने बता दिया कि आप 090 का कोर्स स्टीयर कर रहे हो, ठीक है, और ये 090 का जो कोर्स है हमारा कोर्स स्टीयर्ड बन जाएगा, करेक्ट है बेटा? अब आपको उन्होंने सिचुएशन चेंज कर दी, उन्होंने बोला है कि आपको एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, ये करंट है उस एरिया में, काउंटर एक्टिंग वाली सिचुएशन आ गई,
अब काउंटर एक्टिंग वाली सिचुएशन में अगर आप ट्रायंगल को सॉल्व करोगे तो जो आंसर आपके पास आएगा उसे हम कोर्स स्टीयर्ड तो नहीं बोल सकते, क्योंकि शिप तो अभी चलना शुरू नहीं हुआ है, वो तो जब आप कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद ही चलेगा ना। तो हम उसे बोल देते हैं कोर्स टू स्टीयर, CTS। ये फर्क है दोनों में। अगर शिप ऑलरेडी ट्रैक पे चल रहा है तो उसे कोर्स स्टीयर्ड बोल दिया जाता है, और अगर हम प्लॉटिंग से फाइंड आउट करते हैं कि कौन से कोर्स पे हमें चलना है तो उसे CTS बोल दिया जाता है। दोनों का सिंबल एक ही है, सिंगल एरो के साथ हम इसे शो करते हैं, और ट्रायंगल में दोनों की लोकेशन पोजीशन बिल्कुल सेम है। समझ गए बेटा? इज इट क्लियर? सर ओके।